So let's see this. We have K-means. We are going to start the new algorithm in today's session, which is nothing but your K-means. So K-means clustering is nothing but it is an unsupervised machine learning algorithm. It is one of the simplest and most commonly used clustering techniques or your unsupervised machine learning algorithm. And K in your K-means clustering denotes the number of clusters to be formed. So let's say, for an example, you have a data, and if you have plotted the data points, it is looking like this. So in order to form a cluster in your data, all you need to do is you can form a group or form a cluster like this. This could be your first, this could be your second cluster, this could be your third one, and this can be your fourth one, right? As a char cluster that we have, or we can form four clusters in totality. So what is expected from K-means is this thing. This is your expectation from K-means. So in your data, we have plotted the data on your x and y axis on your Cartesian plane, and you use your K-means clustering algorithm, and it will directly give us the this thing, which is nothing but it is forming clear-cut cluster of the data points. Now this is very interesting. Let's see the step-by-step breakdown of your K-means. So your step one is I want you to make note of this point or just remember this. Step one is your choose number of clusters. Step two is randomly select k centroids. Three is assign each data points to the closest centroid. This forms k cluster. Four is compute and place the centroids at the center of every cluster. Five is reassign the closest data points to the new centroids. If any reassignment took place, go to step 4. Otherwise, go to step 6. And 6 is your all the data points are now clustered. Now let's see this k how this works basically. So as of now, at this particular point of time, just remember key we have randomly selected number of cluster value k is equal to 2. K is equal to 2 is the number of cluster that we have selected randomly. This is pure random. ये pure randomly select किया है. And in future or in after some time, we are going to discuss this key how to select the optimal number of clusters. But as of now, just remember key we have selected number of clusters is equal to 2. Now if you see your step 1 में क्या है, step 1 में है choose the number of clusters k. तो अभी ये देखा जाए तो नंबर ऑफ क्लस्टर के अपन ने सिलेक्ट किया है वो है 2. नाउ तुम्हारा सेकंड है रैंडमली सिलेक्ट के सेंट्रॉइड्स. अभी स्टेप 2 देखेंगे रैंडमली सिलेक्ट के सेंट्रॉइड. अब ये प्योर रैंडम है. दिस इज योर सेंट्रॉइड 1, दिस इज योर सेंट्रॉइड 2. ये दिस इज प्योरली रैंडम थिंग. यू कैन प्लेस इट ओवर हियर एज वेल, दैट्स नॉट एन इशू. तो ये पूरा रैंडम सिलेक्ट किया है जस्ट फॉर एन एग्जांपल से कि मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे सेंट्रॉइड्स 2 सेंट्रॉइड. नाउ क्या करना है तुमको, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, intersection line between two centroids, and you have to draw the perpendicular bisector to that line. Now ये जो लाइन है, दिस इज सपोज योर लाइन नंबर 1, ये तुम्हारा सेकंड लाइन है. सो लाइन नंबर के 1 के यहाँ पे जो डेटा है, दिस आर योर, दिस बिलोंग्स टू दिस क्लस्टर. और ये लाइन नंबर 1 के यहाँ जो डेटा है, मतलब ये डेटा पॉइंट विच बिलोंग्स टू दिस क्लस्टर. नाउ क्वेश्चन टू गुरप्रीत ओवर हियर, ये डेटा पॉइंट कौन से क्लस्टर में जाएगा? This data point, let me mark. It will go to which cluster? So the lower one. Yeah, blue or green? ये डेटा ब्लू में जाएगा या ग्रीन में जाएगा? Blue This में. data. Exactly. And this data will go to which place? Green one. Right. Now Dharnidhar,
ये डेटा कहाँ पे जाएगा? दिस डेटा, दिस डेटा कहाँ पे जाएगा? सॉरी, हाँ, यस. So basically, in your line, there is a rule. We have not performed the next rule, next steps. So that is the reason the data points are coming online. But actual case में ऐसा नहीं होता कि line पे तुम्हारे data points belong नहीं करते. Why? Because we are left with these steps. So let's go to step number 3. Sorry, step number 4. Step 4 क्या है? Compute and place the centers at the center of every cluster. So मान लो ये तुम्हारा क्लस्टर 1 हो गया, ये तुम्हारा क्लस्टर 2 हो गया, राइट? तो तुम्हारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है, वो क्लस्टर का, और ये क्लस्टर का सेंटर यहाँ पे आ रहा है. तो क्या करना है तुमको? कॉम्पिटेंट प्लेस द सेंट्रॉइड्स एट द सेंटर ऑफ एवरी क्लस्टर. तो सेंटर पे तुमको सेंट्रॉइड प्लेस कर दो. दिस इज स्टेप 4, राइट? तो अभी स्टेप किसके 4, सेंट्रोइड पे पॉइंटर प्लेस कर दूं? ये जो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज योर क्लस्टर 1. ये पूरा का पूरा जो है दिस शेप, इसमें सब डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ना. तो दिस इज योर क्लस्टर 1. सिमिलरली इसमें सब डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं जो वॉयलेट कलर से है. जो शेप में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो देखो सिर्फ. ठीक है, ठीक है. दिस इज योर सेंट्रॉइड नंबर 2. तो ऑब्वियसली ये पूरा ये जो शेप है, सपोज ये जो शेप है पूरा, ये क्लस्टर हुआ है तुम्हारा, और उसका सेंटर यहाँ पे आया, राइट? सेंटर ऑफ योर सेंट्रॉइड और क्लस्टर बिलोंग्स टू दिस प्लेस. क्योंकि सेंटर, ये पूरा शेप का सेंटर कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, राइट? सिमिलरली ये जो शेप है ग्रीन वाला पूरा, उसका सेंटर यहाँ पे आएगा रैंडमली. बेसिकली सेंट्रॉइड क्या रहता है? डू यू नो दिस सेंट्रॉइड? ऑब्वियसली गुरप्रीत मस्ट बी हैविंग दिस आइडिया. व्हाट इज सेंट्रॉइड? यस, धारनीधर एंड गुरप्रीत. सर, सेंट्रोइड इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ना. मतलब हम तो ज्योमेट्री में सेंट्रोइड उसको बोलते हैं ना, कि जो ट्रायंगल का सेंटर बनता है. ट्रायंगल में वो वहाँ पे बनता है. It is not related to triangle. It is related to all the geometry out there. So centroid is nothing but where your center of mass is accumulated. सेंट्रल पॉइंट. ओके, राइट. Center of mass या फिर center of gravity. तो सपोज मान लो तुम्हारा ऐसा शेप है, ये बॉडी एक, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा, राइट? सेंटर में. सिमिलरली आपका रेक्टेंगल हो गया, तो उसका सेंट्रॉइड का लिए फॉर्मूला अलग है. मतलब डिफरेंट फॉर्मूलाज वी हैव, बट दिस इज नथिंग बट योर सेंट्रॉइड. सो सिमिलरली ये जो शेप है ग्रीन, उसका पूरा सेंटर और मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, राइट? तो ये तुम्हारा सेंट्रॉइड बनेगा. सिमिलरली वायलेट शेप यहाँ पे बनेगा. तो you have to compute and place the centroids at the center of every cluster. So तुमने यहाँ पे मार्क कर लिया दोनों सेंट्रोइड का और दोनों शेप का सेंट्रोइड बेसिक. नाउ तुम्हारा स्टेप क्या है कि प्लेस द सेंट्रोइड एट द सेंटर ऑफ एवरी क्लस्टर. प्रीवियसली द सेंट्रोइड वाज हियर, नाउ यू आर शिफ्टिंग दैट टू दिस प्लेस. कैन यू सी दिस? प्रीवियसली ऊपर था, तो ये एरो से भी तुमको दिख सकता है कि वी आर शिफ्टिंग दिस सेंट्रोइड टू द वेरी प्लेस ओवर हियर. यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर. अभी you have to go back to the step 3 again. See, compute and place the centroid किया, फिर अगेन ये स्टेप कंटिन्यू करना है तुमको.
ये जो रिपीटेशन है वो। ओ अभी नाउ you have just a minute guys. Yeah, now you have to compute and place the center at the at the center of every cluster. Again same step करना है तुमको, दो लाइन पर perpendicular line form, मतलब you have to draw a line from the centroid, again perpendicular line you have to draw, again this time this could be this thing, and मतलब ये तुम्हारा centroid 1 बनेगा, and this could be a centroid 2. Now same thing you have to do, अगेन सेंटर यहाँ पे बनेगा, मतलब ये सेंट्रॉइड का और ये शेप का बेसिकली सेंटर और सेंट्रॉइड यहाँ पे आएगा। सिमिलरली ये शेप का सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। सी वी आर डूइंग कंप्यूटर प्लेस द सेंट्रॉइड्स एट द सेंटर ऑफ एवरी क्लस्टर। क्लस्टर का सेंटर का कौन सा है, ये येलो का सेंटर यहाँ पे आएगा, राइट। आर यू एग्रीइंग दिस पॉइंट? यस सर। और ये वॉयलेट का क्लस्टर का सेंटर यहाँ पे आएगा, राइट, सेंटर। हाँ तो जी। क्या करेंगे अपन, ये सेंट्रॉइड यहाँ पे ये करेंगे और ये सेंट्रल विल शिफ्ट टू दिस प्लेस, सेंटर पे शिफ्ट करेंगे, मतलब ये ऐसे था वो ऐसे हो गया, राइट। नाउ अगेन विल परफॉर्म दिस स्टेप, ऐसे करते करते रिपीटेशन हो जाएगा ये, और फाइनली यू विल कम टू दिस प्लेस, ऑल द डेटा पॉइंट्स आर नाउ क्लस्टर। देखो पहले स्टेप में योर डेटा पॉइंट्स आर नॉट क्लस्टर्ड. Now finally we have to do perform this step till the time key you will form the clusters, two clusters out there. So finally your all the data points are now clustered, right? Can you see this? कि data points सब सारे cluster हो गए, तो ये तुम्हारा steps है. You have to go to this one more time. We'll see this कि पहले क्या करना है, random cluster randomly centroid के number select करने. तो यहाँ पे randomly we have taken 2. Now कहीं पे भी तुम्हारा centroid place कर देने का, तो तुमने यहाँ पे किया, यू कैन डू इट एनीवेयर लाइक दिस, दिस इज नॉट द रेस्ट्रिक्शन. फिर लाइन तुमको फॉर्म करना है, असाइन डेटा पॉइंट्स टू द क्लोजेस्ट सेंटर्ड, मतलब ये ऐसे लाइन इंटरसेक्शन फॉर्म करना है, और ये लाइन के यहाँ पे ये क्लस्टर में जाएंगे और ये लाइन के यहाँ पे ये क्लस्टर में जाएंगे. नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंटर्ड, दिस फॉर्म के क्लस्टर. तो ऐसे स्टेप वाइज स्टेप करते जाना है और you will form a cluster like this. So ये तो हुआ तुम्हारा backend में क्या कैसे वर्क होता है ये. This is how your KMeans works in the backend. It's very easy guys, not a big deal. So अभी क्या करना है तुमको, तुमको ये क्लस्टर का सेंट्रोइड यहाँ सेंटर पे आएगा और ये क्लस्टर का यहाँ पे आएगा, राइट. तो क्या करना है, हर एक डेटा पॉइंट का सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकालना है, ऐसे करके. इसको बोलते हैं विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स. Within cluster sum of squares.
सिमिलरली इसको भी ऐसे करना है कि वी विल फाइंड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द डेटा पॉइंट्स आउट देयर. This is also your within cluster sum of squares, right? So this is your parameter within cluster sum of squares. Now अभी तक यहाँ पे मतलब till now we have completed the back the intuition behind your k-means. Now we'll go back to the question that we had over here. यहाँ पे दो लिया क्लस्टर का और number of clusters is equal to 2. But how to select the optimum number or the best value of your k? How to select correct k value for k means? So इसके लिए तुमने WCSS निकाला है राइट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो क्या करना है तुमको और क्या करता है, दिस इज नोन एज एल्बो कर्व एंड वी हैव सीन दिस इन योर KNN, के नियरेस्ट नेबर पे भी देखा था ये. तो तुमको क्या करना है अभी, WCSS y एक्सिस पे प्लॉट करना है. y एक्सिस पे तुम्हारा WCSS आएगा और x एक्सिस पे तुम्हारा नंबर ऑफ क्लस्टर्स आएंगे. तो मान लो अभी दो क्लस्टर है तो WCS तुमको निकालेंगे. दिस इज योर टू क्लस्टर, the number of clusters in your x axis, basically k value. So मान लो तुमने दो क्लस्टर निकाल के, दो क्लस्टर लेके WCSS वैल्यू निकाला, चार लेके वैल्यू निकाला, सिमिलरली 6 और 8, 8 क्लस्टर लेके वैल्यूज निकाले सब WCSS के. तो वो कर्व ऐसा सपोज प्लॉट हुआ, योर कर्व इज लुकिंग लाइक दिस, WCSS with respect to number of clusters key. Now you have to see the bend part, इसको बोलते हैं elbow. This is similar to your elbow of your hand. तो जहाँ पे बेंड है वैसे this is your optimal number of clusters. So this is not hard and fast rule basically guys. यहाँ पे you can go and take 10 cluster out there. It's obvious you can go and take 10 cluster. But तुमको accuracy अच्छा नहीं मिलेगा और तुमको तुमको computational cost ज़्यादा लगेगा. Basically if you take number of clusters equal to more number of clusters, 10 लिया तुमने suppose, तो तुमको तुम्हारा accuracy तो सबसे बुरा आएगा, फर्स्ट पॉइंट. और तुम्हारा तुमको टाइम लगेगा टू डू दी और टू बिल्ड द मॉडल. So model building time लगेगा, it will increase, फिर computational time it will increase. So that is the reason we have to go with the optimal cluster. And how to find optimal cluster is you have to go to the bend. जहाँ पे bend है वहाँ पे ऐसा दो लाइन फॉर्म कर सकते हैं और you can find the average of this. So this is 2, this is 4. So any value between 2 and let's say 3. This is your number of optimal number of clusters. Is this thing clear, guys? कैसे how to select the correct value of k? Yes, yes. Yes, sir. Now अभी ये एक k means में प्रॉब्लम क्या है? This is your problem in your k means. It is known as random initialization trap. तो तुम्हारा मॉडल कौन से ट्रैप में फंस जाता है कि फॉर एन एग्जांपल तुम्हारे पास डेटा ऐसा है, दिस इज योर डेटा, यू हैव प्लॉटेड इट ऑन x and y axis. सो ये डेटा के you can easily say that कि this could be your cluster 1, this could be your cluster 2 और ये तुम्हारा cluster 3 होना चाहिए. But कभी कभी this is your clusters right, but कभी कभी क्या सीन होता है, तुम्हारा मॉडल रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप में फंस जाता है. तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ दिस थिंग तुम्हारे क्लस्टर ऐसे बन रहे हैं, ये पूरे इसमें डेटा पॉइंट्स में डिस्टेंस है, यू हैव डिस्टेंस इन दिस डेटा पॉइंट्स, स्टिल इट इज कंसीडरिंग एज वन क्लस्टर. और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं तो भी इट इज कंसीडरिंग एज द सेपरेट क्लस्टर्स आउट देयर, राइट. So this is your random initialization trap. It initializes the clusters anywhere in the, or it randomly initialize the clusters. So what you have to do is you can take it out as your homework कि random initialization trap तो मैंने आपको बोल दिया क्या है ये, but random initialization trap
You have to read about random initialization trap, what are the problems associated with that, and what is the solution of random initialization trap. Can you guys do this? Sure, sir. तो आई विल टेल यू कि सॉल्यूशन तुम्हारा के मीन्स प्लस प्लस एल्गोरिदम है. दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप. तो फिर दिस इज योर सॉल्यूशन, एंड इफ यू यूज के मीन्स प्लस प्लस एल्गोरिदम, तो यू कैन easily eliminate this trap in your model. So in this way we have finished this. तो यहाँ पे अपन ने वी हैव लर्न थ्री कॉन्सेप्ट्स आउट देयर. तीन कौन से किया कि कैसे तुम्हारा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम वर्क होता है. वी हैव सीन द स्टेप्स फॉर दैट एंड इट वाज प्रीटी इजी, राइट? कि कैसे ये क्लस्टर्स फॉर्म करता है. दिस इज योर फर्स्ट डिस्कशन. सेकंड डिस्कशन इज योर एल्बो कर्व, हाउ टू सिलेक्ट द के correct k value for k means. And your third is random initialization trap. So we have discussed only three concepts over here. So is it clear for Dharnidhar and Gurpreet? ये तीनों concept अभी तुमको, do you have any doubts in this? नहीं सर, क्लियर है. So we have completed the K-means intuition. Now, I'll stop my screen. I'll stop my screen sharing, and let's see the implementation part for this K-means. So neither and Gurpreet, anybody can share your screen. We'll see the implementation part. Or all you need to do is you have to go to the drive. ड्राइव पे जाके वो के मीन्स का जो डेटा सेट है वहाँ पे यू हैव टू डाउनलोड दैट एंड शेयर योर स्क्रीन. डेटा सेट कौन सा है सर?
Who is sharing the screen? I'm waiting for this thing. नहीं नहीं, इसमें ट्रेंड स्प्लिट का कुछ सीन नहीं होता है. वी डोंट यूज ट्रेंड स्प्लिट इन अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज में तुम्हारा टारगेट वेरिएबल रहता है क्या दानिश? डू यू हैव टारगेट वेरिएबल इन अनसुपरवाइज? Yes, Dharnidhar Gurpreet. Do we have target variable in unsupervised machine नो learning? नो नो। सर मैं अगर म्यूट में ही ट्रेनिंग बोल रहा होता था तो कुछ इसलिए तो टारगेट कैसे हो? नहीं होता है, Sorry? नहीं होता है। नहीं नहीं. What is Gurpreet? What you're trying to say? नहीं, आई सेड कि ना तो इस कुछ होगा क्योंकि अनसुपरवाइज्ड है तो ना ट्रेन कर सकते हैं, नीदर टारगेट विल बी एब्सेंट एज वेल. Yeah, so we don't have target variable in your supervised unsupervised machine learning. So इसके लिए पैकेज इंस्टॉल करो from sklearn.cluster, import capital K capital M and KMeans मतलब means. Yeah. Now run this. Go to the next line. df is equal to pd dot read underscore csv. अब डेटा कौन सा डाउनलोड करना है यहाँ आप पे? टोल्ड नो कि यहाँ पे केमिन्स का डेटा नहीं है ना यहाँ पे? नहीं है सर, है. नहीं है. और जस्ट मिनट. मैं म्यूट पे ही बोल रहा था, मुझे लगा आंसर नहीं वाला। अच्छा ओके चलो आई अपलोड KNN में है शायद. जस्ट चलो आई अपलोड दिस न्यू फोल्डर KMeans और I'm uploading it that folder. So desktop में जा sorry it's over.
चलो आई अपलोडेड इट, रिफ्रेश करो उसको और डाउनलोड करो। चलो अभी हेड और अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, we'll discuss the problem statement now. So a problem statement is we have customer data from, so let's say any mall out there, and mall wants to make strategies for the customers out there. So 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 that they can spend good amount of money. So what you have to do, what mall is trying to make is they are trying to make a strategy. And imagine if you are working as a data scientist, you have to create a strategy for this type of problem statement. मतलब क्या करना है कि based on customer, so that they can spend good amount of money on mall in shopping, you have to build or you have to create a strategy. ऐसी strategy बनानी है कि उनका spending score बढ़ जाए. So to tackle this problem, what we have is we can use K-means clustering algorithm. तो क्या करेंगे, जो जो डेटा पॉइंट्स है उसके क्लस्टर्स फॉर्म करेंगे और देन वी कैन सी दी or we can form a strategy out there. So now, write down over there x is equal to df double square bracket annual income, quotes में annual income comma spending score. So copy that column name. A is capital, right? So instead of just writing over there, you can copy it so that you won't get any error over there. आगे Comma देखे, you have to write down spending score as well. Now run this. Now give heading as elbow method to find optimal number of clusters. एल्बो मेथड फॉर ऑप्टिमल Number of clusters. Now run this. Now just copy this lines of code that I'm giving in the chat, and then we'll
discuss this. कैपिटल एक्स है ना वहाँ पे, तो capital X is not defined. यहाँ पे क्या है? हाँ, So just scroll up now, we'll see this explanation part. What we are doing, we are creating a blank list for WCSS in line number 1. Just zoom it little bit. ठीक है। Control plus. Yeah. Now for k in range, what we are doing, initially we are giving 10 number of clusters. So for k in range 1 to 11, k means is equal to, this is variable, left hand side of your equation. Right hand side is k means package. And number of clusters is equal to small k. Init क्या है? Init is it's an attribute that we have in k-means package. So init में k-means plus plus we are using. So as we have discussed that k-means plus plus if you use, you will get rid of random initialization trap. And then comma random state is equal to 3. So if you see the explanation, k-means will avoid random initialization trap, k-means plus plus. Then we are fitting that k-means that we have created on x variable. मतलब एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर पे के मींस पैकेज फिट कर। फिर WCSS डॉट अपेंड मतलब ब्लैंक लिस्ट जो था WCSS का, उसमें के मींस डॉट इनर्शिया ये कर रहे हैं। और इफ यू राइट डाउन के मींस डॉट इनर्शिया, व्हाट इट डज इज इट सिंपली हेल्प्स अस टू डू द क्लस्टरिंग पार्ट। मतलब क्लस्टरिंग वो बहुत आसान से करता है। दैट इज द इनबिल्ट कीवर्ड दैट वी हैव. So it measures how well a dataset was clustered by k-means. So k-means inertia क्या करता है? वो measure करता है कि your dataset, how much is your dataset or how well your dataset was clustered by k-means. You can search it on web कि k-means dot inertia क्या फायदा है. You can search it over there. You'll understand this particular point. K-means dot inertia. You can read this afterwards. Now go back to the code out there. Now what we are doing, we are plotting that all the 10k value and its CSS value, WCSS. टाइटल दे रहे हैं एल्बो मेथड, एक्स लेबल दे रहे नंबर ऑफ क्लस्टर्स, वाई लेबल है तुम्हारा WCSS वैल्यू. एंड ये plt डॉट शो किया तो वो क्या करता है? डू यू गाइस नो दिस? प्लॉट की सॉरी, प्लॉट किया ना? नहीं, इट लुक्स फॉर करंटली एक्टिव फिगर ऑब्जेक्ट्स. मतलब ये थोड़ा इंटरैक्टिव मेथड है. यू कैन रीड दिस थिंग एज वेल कि plt डॉट शो क्या करता है. इट्स वेरी इजी. तो वी हैव प्लॉटेड द एल्बो मेथड. नाउ बेस्ड ऑन द, मतलब ये WCSS में ये अपेंड किया है ना हमने, के मींस इनर्शिया, ये वैल्यू ऐसे आती है क्या इसकी क्लस्टर्स की? या जो k-means inertia है ना, वो ही, और your k-means package will find the clusters. और k-means inertia measures how well your data set is clustered by k-means.
तो के मीन्स में जो अपन ने देखा अभी स्लाइड में, जो बैकएंड में कैसा वर्क होता है, वो के मीन्स वर्क करेगा, 10 क्लस्टर फॉर्म करेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप जाके क्लस्टर करेक्टली प्लेस कर देगा वहां पे डेटा पे, और फाइनली तुम्हारा WCSS वैल्यू वो कैलकुलेट करेगा। ये के मीन्स ही करता है सब। Okay. एंड नाउ यू आर जस्ट अपेंडिंग के मीन्स डॉट इनर्शिया, उसमें से तुमको इनर्शिया इसका वैल्यू मिल जाएगा WCSS का। मतलब all the things that we have learned from PPT, it works in the back end of your K-means. Okay. तो we have seen right कि ये किलोमीटर कैसे प्लॉट करना है, WCSS वैल्यू और उसका नंबर ऑफ क्लस्टर्स का ये। तो just scroll up, if you see we are giving range from 1 to 11. So, पहले एक क्लस्टर लेगा, उसका WCSS फॉर्म करेगा, फिर 2 क्लस्टर लेगा, उसका WCSS फॉर्म करेगा, ऐसे करके 10 क्लस्टर तक जाएगा वो, और तुम्हारा WCSS वैल्यू एंड क्लस्टरिंग वो सब करके जो PPT में देखा वो प्लॉट करेगा एल्गो मेथड, राइट। ना अभी बताओ मुझे गुरप्रीत एंड धारनीधर, नंबर ऑफ क्लस्टर ऑप्टिमल कौन सा रहेगा यहाँ पे? 3 to 5, मतलब 4 के अराउंड, 3 to 5, 4 या 5, राइट? 4, हाँ 5 भी ले सकते, ओके 4 ही आप ले सकते, you can put any range out there from 3 to 5. Yeah. So अभी heading दे दो मॉडल बिल्डिंग and we'll build the model. Now model building में copy this line that I'm giving in the chat. तो अभी क्या कर रहे हैं, के मीन्स इज इक्वल टू कैपिटल के मीन्स नंबर ऑफ क्लस्टर 5 सिलेक्ट कर दे, इनिट में के मीन्स प्लस प्लस दे रहे, रैंडम स्टेट 3, सेम थिंग वी आर डूइंग, और के मीन्स फिट x, और क्लस्टर्स इज इक्वल टू के मीन्स डॉट, के मीन्स को बोल रहे हैं कि प्रेडिक्ट कर अपने x पे। तो सारे डेटा पॉइंट्स के क्लस्टर जो रहेंगे वो ये पॉइंट में आएंगे, दिस पॉइंट क्लस्टर्स इज इक्वल टू दिस। नाउ इफ यू चेक व्हाट डू यू हैव इन योर क्लस्टर्स, you can get to know clusters, C capital, check. Now run this cell. Now if you see we have 5 clusters, और जो 5 clusters में we have this values out there. So I think if you check shape of your df, just check df dot shape, we have 200 columns. Run this. So 200 customers के सारे clusters form किए हैं ये, these are your clusters.
Now give heading as visualizing the clusters, and we will see how to see these clusters by using matplotlib. Just copy the code that I've given in the chat. ये देखें। Yeah, this one only. Copy this. सब पूरा पेस्ट नहीं हुआ, आई थिंक हाँ इनकम्प्लीट। किधर तक हुआ तुम्हारा? ये लेबल इक्वल टू क्लस्टर 3 तक कंप्लीट हुआ है, उसके बाद क्लस्टर 4 वाले से रहता, क्लस्टर 4 हाफ। इतना ही है ना? नहीं नहीं नहीं, वी हैव क्लस्टर 5 एंड दिस थिंग एज वेल। 5 क्लस्टर्स है ना हमारे पास। ओके। Copy this and paste it over there. अच्छा 4 भी दिया है मैंने शायद, नहीं 5 दिया। Copy this, paste it in your next cell. Now run this. आ गए सर क्लस्टर्स। Yeah. Now so let's see the explanation for this code. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं, plt dot figure fix size दे रहे हैं तुम्हारा 8,8. You can do any fix size over there. This is just a figure output का size. Now if you see plt dot scatter, उसमें x dot iloc of cluster is equal to 0,0, comma x dot iloc of cluster is equal to 0,1. S is equal to 100. These are the attributes that we have inside the cluster. So S, C is color. Label is equal to, we are giving label as cluster 1. So जो red रहेगा उसके लिए cluster 1 is your label. And S is equal to 100. Just a minute. Let me check this thing. यहाँ पे S का क्या फायदा है, उसके लिए K-means देखना पड़ेगा। K-means अच्छा ये लिंक में do we have this in our sklearn website? What is S in ये कौन सी वैल्यू है? ये 0,0 ये इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू है ना, मतलब क्या हो रहा है? और just a minute. ये तुम्हारा क्या है? Y predict see in the lines of code over here क्या लिखा है कि ranging we have cluster ranging from 1 to 5, right? So first coordinate क्या है वो x of
cluster is equal to 0 comma 0. It is containing the x value for the showing matrix of feature value. मतलब 0 and y predict is ranging from 0 to 1. तो तुम्हारा output image is clearly showing the 5 different clusters with different colors. और clusters are formed between two parameters of the dataset, मतलब annual income and spending score. और cluster 1 shows the average salary and average spending score of the year. तो just scroll up to the data that we have. Head दिखा मुझे. अच्छा क्या कर रहे हैं? We are categorizing our data into 4 parts. तो 4 में क्या रहेगा, मतलब 1 में क्या है तुम्हारा, जो 1 है बेसिकली राइट हैंड साइड वाला 1. व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट स्क्रॉल डाउन. नहीं कोड दिखाओ, कोड. तो ये जो है x डॉट आई लॉक ऑफ क्लस्टर इक्वल टू 0 कॉमा 1. 1 में क्या रहेगा तुम्हारा, 1 में रहेगा एवरेज सैलरी, मतलब जो कस्टमर है जिनकी एवरेज सैलरी है और जिनका एवरेज स्पेंडिंग स्कोर है. दिस कस्टमर बिलोंग्स टू योर क्लस्टर 1. ये तो मतलब ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपन. क्लस्टर 2 में कौन से कस्टमर रहेंगे, जिनका हाई इनकम रहेगा बट लो स्पेंडिंग, जिनकी स्पेंडिंग कम है. वी आर गोइंग टू मेक नोट ऑफ दिस, बट अभी जस्ट ध्यान में रखो कि क्लस्टर 1 में क्या है तुम्हारा, जिनका इनकम एवरेज है और सैलरी भी एवरेज है, मतलब स्पेंडिंग भी एवरेज है, ऐसे कस्टमर. क्लस्टर 2 में कौन से कस्टमर है, जिनका इनकम हाई है बट उनका स्पेंडिंग स्कोर कम है. क्लस्टर 3 में क्या है तुम्हारा, जिनका द कस्टमर हु हैज लो इनकम एंड लो स्पेंडिंग स्कोर. और क्लस्टर 4 में ऐसे कस्टमर है जिनका लो इनकम है बट स्पेंडिंग स्कोर वेरी हाई है. और क्लस्टर 5 में तुम्हारा है कस्टमर विथ हाई इनकम एंड हाई स्पेंडिंग स्कोर. ये कैसे पता चल रहा है, इफ यू सी द एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या है तुम्हारा, एनुअल इनकम, राइट. ग्राफ में हाँ. और वाई एक्सिस में क्या है तुम्हारा, स्पेंडिंग. सो अभी देखो क्लस्टर 1 कौन सा है, रेड क्लस्टर है, राइट. तो रेड क्लस्टर दोनों के वैल्यू एवरेज है, स्पेंडिंग स्कोर भी एवरेज है और व्हाट इज द अदर पॉइंट, एनुअल इनकम भी एवरेज है. नाउ सी द क्लस्टर 5. अभी 5 देखो, 5 ब्लू कलर है ना, सियान कलर है, स्काई ब्लू. तो 5 में कौन से कस्टमर है जिनका एनुअल इनकम बहुत हाई है बट स्पेंडिंग स्कोर बहुत कम है. सिमिलरली अभी क्लस्टर 3 देखो, ग्रीन में कौन से कस्टमर है, जिनका एनुअल इनकम भी कम है और स्पेंडिंग स्कोर भी कम है. हाँ. अभी ब्लू क्लस्टर देखो, वो कौन सा क्लस्टर है, जस्ट अ मिनट, नाउ गुरप्रीत विल आंसर दिस. ब्लू डेटा पॉइंट्स आर विच क्लस्टर, सर जिनकी स्पेंडिंग स्कोर हाई होगा. और इनकम, सर आप डार्क ब्लू पूछ रहे हो, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू है ना ऊपर, डार्क ब्लू. जिनकी एनुअल इनकम भी 80 के अराउंड, 80 से ऊपर. हाँ बट हाई में बोलो, हाई और लो में. हाई. दोनों वैल्यूज हाई है. हाँ जी. अभी पिंक में कौन से, सर एनुअल इनकम लो है और स्पेंडिंग स्कोर है. हाँ. तो by using KMeans we are forming clusters out there, और ये क्लस्टर से तुम्हारा स्ट्रेटेजी बन रहा है. तो वहां पे जस्ट कॉपी दिस दैट आई एम गिविंग ओवर हियर, कॉपी करो.
पूरा पेस्ट नहीं होगा. हाँ हाँ. Can you paste this everything? नहीं, ओके. सो ये इनकम्प्लीट है ना, ये भी अभी. Should we have more targets? नहीं नहीं, incomplete. This is not incomplete. So this is your question कि which customer should our mall should target to make a strategy. कौन से कस्टमर को टारगेट करना चाहिए? What is your analysis for सर, this? जिनका स्पेंडिंग स्कोर कम है अभी और एनुअल इनकम हाई. एनुअल इनकम हाई है, बट स्पेंडिंग स्कोर कम है. हमें स्पेंडिंग ग्रीन स्कोर वाले. बढ़ाना है शायद. नहीं सॉरी, ये क्लस्टर 5. Cluster 5 cyan color. हाँ. या और don't you think so कि रेड वाले का कलर. स्पेंडिंग स्कोर हाई है और स्पेंडिंग स्कोर लो है और इनकम मतलब एवरेज है और दोनों एवरेज है बेसिकली. तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन से रहेंगे? क्लस्टर 5 वाले, राइट? क्लस्टर 5. हाँ. जस्ट कॉपी दिस लाइन दैट आई एम गिविंग इन द चैट. ऐसे तुम्हारा एनालिसिस होता है इन योर ऑर्गेनाइजेशन. Cluster 5 shows the customer with high income and high spending score. सर ये लो इनकम है क्या? लो इनकम करो वहाँ पे. नहीं, लो स्पेंडिंग स्कोर करो. हाँ. हाई इनकम एंड लो स्पेंडिंग स्कोर. क्लस्टर 5 कौन से है? जिनका हाई इनकम तो है बट स्पेंडिंग स्कोर लो है, राइट? हाँ. इनको भी टारगेट करना है. और जो जो सबसे ऊपर है ना, जिनका इनकम तो हाई है और स्पेंडिंग स्कोर भी हाई है, मतलब ये प्रीमियम वाले कस्टमर रहते हैं जो बहुत सारा शॉपिंग करते हैं, जिनका इनकम भी हाई रहता है और इनका स्पेंडिंग स्कोर भी बहुत हाई. तो इनको इनको स्ट्रैटेजी मतलब इनको प्रॉफिट, इनको डिस्काउंट दिया और मतलब दीज आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स फॉर योर मॉल. सर जैसे मेंबरशिप दे देते हैं ना, सब्सक्रिप्शन दे देते हैं इनको, ये वो चीज आ गई ना, लाइफ टाइम. राइट. तो इनको इनको जब अगर इफ यू मेक स्ट्रेटजीज फॉर दिस कस्टमर तो ये बार बार आएंगे और तुम्हारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा. ऐसा. हाँ, मतलब क्लस्टर 5 और 5. ये 2 नंबर वाला, क्लस्टर 2. हाँ, 2 तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है बट 5 को क्या करना है, उनको खींचना है ऊपर कि ज्यादा जाओ शॉपिंग करो. ऐसा. हाँ हाँ. तो दिस इज योर स्ट्रैटेजी. होगा इतने प्रोजेक्ट? यस. बहुत ही छोटा है. Yeah, your clustering is very easy. And if you want explanation for वो is equal to जो लिख रहे हैं ना, हाँ, यही मुझे समझ में नहीं आया. this is the in this way we proceed further. But ये सब cluster के related है basically. Just copy the thing that I'm giving in the chat. इसका explanation है basically वो. तो टेक्स्ट में कर दो और पेस्ट कर दो आप.
और यहाँ पे x ऑफ y प्रेडिक्ट, तो वो s, आई एम नॉट getting, I mean, I'm not recall, I'm not able to recall this, what is s in that, what is s in games, is it related to सर उसके आगे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वाले के कमेंट में कि जीरो वाले क्लस्टर्स निकाल के वी आर पुटिंग इट इन वन. ठीक है, in the above lines of code we have written code for each clusters ranging from 1 to 5. The first coordinate plt dot scatter, that is x of y predict is equal to 0 0, containing the x value for the showing the matrix of feature value, and y predict is ranging from 0 to 1. Mm, just a minute, I need to see this thing. I'm not able to recall this. Give me a couple of minutes, I'll get back to this. See, your AC is the size of centroid. AC related to size of centroid. तो उसको तुमने चेंज किया 50-50 किया तो तुमको पता चलेगा कि वो जो येलो कलर में सेंट्रोइड दिख रहा है ना उसका साइज बेसिकली. Okay. और लेट्स सी दी ये क्लस्टर इज इक्वल टू क्या है वो, जस्ट अ यहाँ मिनट. यहाँ तो क्लस्टर में एक सिंगल वैल्यू है ना, 0 1 2, यहाँ 0 0 1 0 1, ये नहीं है मुझे यार. या जस्ट अ मिनट. सर स्टैक ओवरफ्लो पे है एक, ये देखना है, एक सेकंड में लिंक पेस्ट कर. देखो अभी ये लाइन में आओ, plt डॉट स्कैटर k means डॉट क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर जो है ना, सेंटर वाला. ये वाला. तो x एक्सिस फर्स्ट वैल्यू इज x एक्सिस,
तो उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकाला है एक्स एक्सिस का बाय यूजिंग 0 और 1 जो सेंट्रॉइड है उसका वाई एक्सिस का डिस्टेंस। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं आई विल शो यू। सेंट्रॉइड जो है ना, सेंट्रॉइड सब हाँ उसका एक्स एक्सिस का इंफॉर्मेशन ये फर्स्ट लाइन से आ रहा है, फर्स्ट पार्ट से, कॉमा के पहले जो लेफ्ट है ना, वो एक्स एक्सिस का इंफॉर्मेशन आ रहा है सेंट्रॉइड के सेंटर का। और सेंट्रॉइड के सेंटर का वाई एक्सिस का इंफॉर्मेशन सेकंड लाइन से आ रहा है, के मींस अंडरस्कोर क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर 1। और इसके ऊपर वाला जो लाइन है उसका स्टैक ओवरफ्लो पे क्या दिया है कि is equal to 0, select the element where y of k means is equal to 0. Zero means model is in x plane and 0 of 1 means model is in y plane. अच्छा, तो 1 क्या रेफर कर रहा है, वैल्यू ऑफ आई ऑफ द क्लस्टर वैल्यू। Specific given row number after selecting these rows only use column 0. This will perfectly this will work perfectly for samples were contiguous. Unfortunately, it is not, since we have to select row based on the cluster. So remember, y contains the result of this thing as first is equal to 0 means element select kar rahe, y is equal to 0 meaning. So the first line will be evaluating x true false of 0, x true false of 1. The bolded value here represents the column's value in your original data set. Each boolean value is mapped to the corresponding row in your data set. If the value is true, अरे बहुत गंदा explanation. Are you getting this, Gurpreet Darnagar? No, sir. ठीक है Just a minute. Just give me a minute. I'll try to find this. चलो चैट जीपीटी को पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो मैं तो जितनी बारी ट्राई करती हूँ सर्वर बिजी आता है।
अभी रिसेंटली एलन मस्क हैज फॉर्म X.AI ऑर्गेनाइजेशन। ओपन एआई तो था ही, अभी और एक बना लिया इसने। चैट जीपीटी इज देयर, क्या सीन है? अच्छा। सर क्या लिखना है कि the purpose of KMeans, why is equal to the code select to data points belonging to the particular cluster, X is the feature of matrix content. तो अभी ये रीड करते हैं। I'll share my screen. This one. क्या कह रहा है ये अभी? ये बहुत सारा अंग्रेजी में लिखा है। चलो we'll try this. In the code to select the data points belonging to a particular cluster, here X is a feature matrix containing the data points, or Y K-means is a vector containing the cluster label assigned by the K-means algorithm. तो अगर ये y underscore k means 0 रहेगा, it creates boolean mask which is true for all the data points belonging to the first cluster. अगर ये false रहेगा तो for all मतलब other data point जो belong नहीं करते cluster 1 को, उसको false रहेगा। तो your y is equal to 0, 0, select the first column of x which represent the first feature of all the data points belonging to cluster 1, or y of k means equal to 0, 1, select the second column of x which represent the second feature of all points belonging to cluster 1. Okay, अभी समझा। वो कोड पे किधर है? कोड किधर है? Where is the code? It's over here. Just a minute. Now, ये क्या बोल रहा है कि अपने x में how many features do we have in x? We have 2 columns, right? हाँ तो दोनों कॉलम को डील करना पड़ेगा ना साथ में, इसलिए ये हाँ दो वैल्यूज है यहाँ पे। और ये क्या है? इट्स रिलेटेड टू योर फर्स्ट फीचर। मतलब फर्स्ट फीचर कौन सा है तुम्हारा? एनुअल इनकम। onion। तो अगर एनुअल इनकम तुम्हारा क्लस्टर 1 में रहेगा तो ये डिफाइन करेगा, और ये सेकंड फीचर ये करेगा स्पेंडिंग स्कोर। तो ये फर्स्ट दे रहे ना अपन 0, 1। तो एज यू नो योर पाइथन इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, तो x डॉट आई लॉक ऑफ 0 क्या रहेगा? x ऑफ आई लॉक ऑफ 0 क्या रहेगा तुम्हारा? एनुअल इनकम, राइट? और 1 क्या रहेगा तुम्हारा? स्पेंडिंग स्कोर। तो ये 1 जो है ये तुम्हारा स्पेंडिंग स्कोर के रिलेटेड है। ये सब 1 है जब, और ये सब 0 है, वो है रिलेटेड टू योर विच वन? एनुअल इनकम। एक्स एक्सिस जो है नहीं, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। हाँ जी, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना। हाँ, तो अभी नाउ जस्ट अ मिनट, अभी क्या सीन हो रहा है? अरे कहाँ पे गया ये?
हम्म, अभी क्या बोल रहे हो कि ये 0 0 जो है, 0 0, it select the first column of x which is our annual income, and वो क्या कर रहा है, सारे डेटा पॉइंट्स बिलोंग टू क्लस्टर वन को ये कर रहा है। उसके जो हर एक डेटा पॉइंट्स है जो क्लस्टर वन को बिलोंग करते हैं उसका क्लस्टर वन में डाल रहा है। और ये एक्स ऑफ जो जो वन है लास्ट में, वो सेकंड कॉलम फेच कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। और जो सारे डेटा पॉइंट्स क्लस्टर वन में जाना चाहेंगे वो उसको क्लस्टर वन में भेज रहा है। दिस ईयर लाइक दिस। तो क्लस्टर वन तुम्हारा क्या है, रेड। समझा? हम्म। गॉट दिस? अभी ये सेकंड लाइन पे आते हैं। अभी दिस इज व्हाट ईयर वन। तो अभी ये है तुम्हारा एनुअल इनकम, ये है तुम्हारा स्पेंडिंग स्कोर। तो जो डेटा पॉइंट है जो क्लस्टर टू में जाना चाहेंगे एनुअल इनकम और योर स्पेंडिंग स्कोर के, वो सब डेटा पॉइंट वो क्लस्टर टू में डाल देगा। राइट? सिमिलरली ये क्लस्टर थ्री में डाल देगा, ये फोर में डाल देगा, ये फाइव में डाल देगा, ऐसा। सो दैट इज द रीजन अपन दो दो इसमें डील कर रहे हैं। और ये तो पता चला कि ये क्या है। लेट्स रीड दिस आउट वन मोर टाइम। इसमें दिया है क्या इसमें? अच्छा ये नहीं डाला ना। लेट्स ट्राई टू ऐड दिस। कॉपी दिस over. So again, K-means clustering. K-means dot cluster centers attributes the returns the coordinate of the centroid of each cluster. अच्छा ये x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पैरामीटर तो बोला कि साइज ऑफ द मार्कर्स ऑफ द सेंट्रोइड, राइट? सी पैरामीटर सेट्स द कलर येलो, ऐसा। इसने सारा ही दे दिया। सो plt dot scatter of this thing add centroids to scatter plot previously created on so basically your this point that we have, ये क्या करेगा, x एक्सिस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और ये करेगा तुम्हारा y एक्सिस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस। मतलब दिस इज योर y एक्सिस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस, दिस थिंग। सी द माउस, नहीं दिस वर्टिकल वन, सॉरी। और हॉरिजॉन्टल इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ऐसा है ये सीन। सो गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ समझ गया। व्हाट अबाउट गुरप्रीत? Yes, Simon. चलो फिर we'll stop here for the day. And next lecture में I'm uploading the next PPT as well in your drive. So you can go through that. Session files में new folder और फिर इसमें let's add this file. तो बेसिकली ये K-means clustering बहुत इजी है। मतलब it's very easy approach to solve the problem. If you see, this is your session file.
Next session में we'll start with the another clustering approach, which is your hierarchical clustering. चलो, do you want to discuss anything related to any aspect of your, or do you have any questions related to ML? वो हम फेस रिकॉग्नाइजेशन उसका प्रोजेक्ट करने वाले हैं क्या? Which one? अ, Face? हाँ वही फेस रिकॉग्नाइजेशन। ये कहाँ से देखा, मतलब ये आगे है ना हमारा तो इसमें डीप लर्निंग में। तुम सिलेबस देख रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा आया दिमाग में, कल मैं कुछ तो देख रहा था। हमारे सिलेबस में है शायद वो एल्गोरिदम कौन सा तो यूनिवर्सिटी में ही शायद, तो हाँ पढ़ने तो वाले। सी, अभी जस्ट अ मिनट, आई विल स्टॉप.